In this lecture, we will discuss about another sorting algorithm, that is bucket sort. This bucket sort is also known as bin sort algorithm. So it is similar to radix sort. The main feature of this bucket sort is that it works just like bucket sort, but with a little bit difference. Like radix sort, it distributes numbers or data items into different buckets. Similarity in bucket sort and radix sort is that both of these use make use of buckets. दोनों में buckets यूज होती हैं. डेटा को स्टोर करवाने के लिए दोनों एल्गोरिदम buckets को यूज करते हैं. Each bucket is then sorted individually using any suitable sorting algorithm or by recursively applying the bucket sorting algorithm. कॉमन चीज़ तो दोनों एल्गोरिदम्स में ये है कि दोनों ही बकेट्स को यूज़ करती हैं, लेकिन जो हमारी रेडिक्स सॉर्ट थी उसमें आप जो कंपैरिजन सॉर्ट है उसको यूज़ करके बकेट्स में से डिजिट्स को पिक करके आप नंबर्स को सॉर्ट करते थे. लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा बकेट में एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद आप कोई सा भी रीज़नेबल सूटेबल एल्गोरिदम चूज़ करते हैं बकेट्स के अंदर मौजूद डेटा को सॉर्ट करने के लिए, या फिर आप अपनी जो बकेट सॉर्ट है इसको रिकर्सिवली अप्लाई करते हैं सो दैट द डाटा इन बकेट इज सॉर्टेड. Therefore, bucket sort also comes under the category of distribution sort. तो हम कहते हैं कि bucket sort जो है वो distribution sort है. Distribution means कि ये जो है ये हमारे जो भी numbers होते हैं array के अंदर उनको proper way में buckets के अंदर distribute करती है. Bucket sort can be implemented with comparison and therefore can also be considered a comparison sort method. Bucket sort क्योंकि नंबर्स का कंपैरिजन भी कर रही होती है, इस वजह से हम इसे कंपैरिजन सॉर्ट भी कहते हैं. So bucket sort is mainly useful when the input is uniformly distributed over a range of values. Bucket sort उस सूरत में हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जब आपकी वो नंबर्स जिनको आपने सॉर्ट करना है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. मतलब ये नहीं होता कि किसी एक जगह पे आपके नंबर्स या किसी एक रेंज के नंबर्स ज़्यादा हैं और किसी दूसरी रेंज के नंबर्स कम हैं. सो इफ़ द डेटा इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन बकेट सॉर्ट परफॉर्म्स वेरी एफिशिएंटली. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ बकेट सॉर्ट. सो बकेट सॉर्ट वर्क्स in 3 steps. First of all, data items or numbers are distributed into different buckets. अब क्या है कि वो अरे या वो लिस्ट जिसकी डेटा को हमने सॉर्ट करना है वो सारा डेटा जो है वो हम डिफरेंट बकेट्स में डालते हैं. अब कितनी बकेट्स होनी चाहिए और किस बकेट में कौन सा डेटा इंसर्ट किया जाना चाहिए, फॉर दिस पर्पस डिफरेंट टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट नंबर्स इन बकेट्स. तो बकेट्स के अंदर नंबर्स को डालने का कोई एक वे नहीं है. यू मे यूज़ एनी वन ऑफ द मेथड दैट आर अवेलेबल. सो डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल टू insert data or to distribute data in buckets. So different algorithms use different methods. We will discuss some of those. In next step, each non-empty bucket is sorted individually using any sorted method. Buckets के अंदर डेटा ऐड करने के बाद कुछ हमारी बकेट्स ऐसी होंगी जिनके अंदर डेटा मौजूद होगा, यानी वो नॉन एम्प्टी होंगी, और कुछ बकेट्स एम्प्टी होंगी. तो जो एम्प्टी बकेट्स हैं उनको हमने कंसीडर नहीं करना. वी विल कंसीडर नॉन एम्प्टी बकेट्स. नॉन एम्प्टी बकेट्स के डेटा को हम कोई सा भी सॉर्टिंग मेथड यूज़ करके उन बकेट्स के डेटा को सॉर्ट कर लेंगे. यानी
हर बकेट के अंदर जो डाटा मौजूद है उसके ऊपर हम कोई सा भी जो है वो अवेलेबल एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे सॉर्टिंग का, और उन बकेट्स के अंदर मौजूद डेटा को सॉर्ट कर लेंगे। तो हर बकेट के अंदर जो डेटा मौजूद था रैंडमली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड था। जब हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो बकेट के अंदर डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि जो हमारी बकेट्स के अंदर डेटा है सॉर्टेड फॉर्म में, वी सिंपली विल कलेक्ट और गैदर द डेटा फ्रॉम द बकेट्स इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब बकेट्स के अंदर जो हमने डेटा को अरेंज किया है वो उन बकेट्स में से हम डेटा कलेक्ट करेंगे और अपनी फाइनल सॉर्टेड अरे के अंदर ऐड कर लेंगे। सो दीज आर थ्री स्टेप्स of working of bucket sort. As already I have told you that this bucket sort works more like radix sort. So what is the difference between radix and bucket sort? Here are some points let us discuss. The first difference between radix and bucket sort is that radix sort is non-comparison sorting method while bucket sort is comparison sorting method, because distributed numbers in buckets are mostly sorted using comparison sorting method like insertion sort, quick or shell sort. रेडिक्स सॉर्ट का हमने रेडिक्स सॉर्ट वाले लेक्चर में देखा था कि ये नॉन कंपैरिजन है, मतलब हम नंबर्स को कंपेयर नहीं करते। रेडिक्स सॉर्ट के अंदर हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, डिजिट्स को कंसीडर करते हैं एंड वी वर्क विद डिजिट्स। डिजिट के कंपैरिजन के बाद हम फाइनल सॉर्टेड लिस्ट हासिल करते हैं। लेकिन जो बकेट सॉर्ट है वो कंपैरिजन सॉर्ट है कि इसके अंदर वी वर्क विद नंबर्स नॉट विद डिजिट्स। So the basic difference between radix and bucket sort is that we in radix sort we work with digits, that's why it is non-comparison, but in bucket sort we work with numbers, that's why it is comparison sort. The second difference between radix and bucket sort is that radix sort distributes the list of numbers into buckets repeatedly, while the bucket sort distributes the list of numbers into buckets only once and then sort each bucket. This is the second major difference कि radix sort के अंदर हम डेटा को repeatedly insert करते हैं. We continue inserting data in radix sort until we work all the individual digits or we work with all the individual characters in case of strings. तो बकेट रेडिक्स सॉर्ट के अंदर ये जो हमारे डिजिट्स हैं या बकेट्स हैं दे आर रीफिल अगेन एंड अगेन, बट इन बकेट सॉर्ट दिस बकेट्स आर यूज्ड ओनली वंस। एक ही दफ़ा हम इनमें डाटा डालते हैं और फिर कोई सा भी रीज़नेबल एल्गोरिदम लेके बकेट के अंदर मौजूद डाटा को हम सॉर्ट कर लेते हैं। The third difference between radix and bucket sort is that radix sort distributes the list of numbers into buckets based on significance digit of the numbers, while the bucket sort distributes the list of numbers using different techniques. अब बकेट के अंदर हमने डेटा को इंसर्ट करना है, तो रेडिक्स सॉर्ट जो है वो एक ही फार्मूला या एक ही मेथड यूज़ करती है कि इट विल कंसीडर द सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जितने भी डिजिट्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन every digit the data will be distributed. While in bucket sort different methods or different techniques may be used. So these are three major differences between radix and bucket sort. Now let us discuss the algorithm of this bucket sort. That is very simple. First of all, we will input data in the array. Then we will distribute the numbers of array into groups and store them into buckets.
अरे के अंदर मौजूद जो हमारे नंबर्स होंगे इनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे यूजिंग सम रीजनेबल और सम सूटेबल फार्मूला और टेक्निक, और फिर वो जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंग बकेट्स में ऐड कर देंगे। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, वी विल सॉर्ट द नंबर्स ऑफ ईच बकेट। हर बकेट के अंदर ग्रुप्स में जो डेटा आया है वो रैंडम फॉर्म में मौजूद होता है। देन वी सॉर्ट द बकेट्स इंडिविजुअली। हर बकेट के अंदर मौजूद जो हमारा डेटा होता है उसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, और सॉर्टिंग के लिए कोई सा भी मेथड यूज किया जा सकता है। In this step, we will collect the numbers from the buckets, keeping them in order and store into the original array. Now we will pick the buckets one by one, and we will transfer the data from the bucket into the array. एक सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमारे पास बकेट्स होती हैं उसी सीक्वेंस में हम उनको कंसीडर करेंगे. We will take one bucket at a time and we will transfer the data of that bucket that is already sorted into the array. In this way we collect all the data from all available buckets and fill the array. So this final array will be sorted. In this way bucket sort works. Here is an example to sort the data using bucket sort. The data is in float form. ये रियल नंबर्स हैं हमारे पास, and there are 6 elements. 6 डेटा आइटम्स आर देयर. हमारे पास बेसिक जो अरे होगी वो 6 एलिमेंट्स की होगी, और उसमें ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़ हैं. अब हमने बकेट सॉर्ट को अप्लाई करते हुए क्या करना है, वी विल टेक buckets. Now how many buckets we will take? As I already have discussed that different techniques are used. One of them is that we will take the number of buckets based on the number of elements. जितने लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उतनी बकेट्स लेंगे. इसके अलावा आप कोई और स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं. यू मे टेक एनी नंबर ऑफ बकेट्स. Okay, now we will rename these buckets. This is bucket 0, 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये हमारे पास बकेट्स आ गई. अब किस बकेट में हमारा कौन सा डेटा जाएगा. Now we will fill these buckets. इन बकेट्स को फिल करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि we will use some formula. क्या फॉर्मूला है. This is the first value that we will pick, 0.74. Now this is the formula that will apply on this number to store it in its corresponding bucket. Here we will take n. Here n is 6, यानी कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, and I is 1, यानी फर्स्ट एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन है. So n in n e of I. Now this symbol, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये this is the symbol of seal. Seal function होता है. We have two functions, seal function and floor function. ये आपके मैथ में यूज़ होते हैं. seal function आपको क्या देता है, जो आपके पास डेसिमल वैल्यू होती है या रियल वैल्यू होती है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको रिटर्न करता है. अच्छा, एन ए ऑफ आई में क्या है, एन की वैल्यू 6 और ए ऑफ आई की वैल्यू, ए ऑफ 1 की वैल्यू 0.74. दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दिस n will be multiplied with a of I. So value of n is 6 and value of a of I is 0.74. So this 6 will be multiplied with 0.74 and we will have the result 4.44. So when we will apply this seal function on this 4.44, we will have the value 4. So
This value of a of I means 0.74 will be stored in fourth bucket number 4. ये हमारी बी फॉर बकेट्स, ये बकेट्स हैं। किस बकेट में हमारी 74 जाएगी? 4 नंबर वाली बकेट के अंदर 74 स्टोर होगा। Similarly, now we will take a of 2, I की वैल्यू 2 and 6. तो a of 2 की वैल्यू 0.17 will be multiplied by with 6 and we will have 1.02. When we will apply ceil function on it, we will have 1. So this 0.17 will be moved to b of 1. ये b of 1 बकेट के अंदर चला जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्या है आपके पास? 0.26 के ऊपर जब आप ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अगेन दिस 0.26 will be moved to this one. Then we will apply the same formula on 0.272. So when we apply the formula on 0.72, so 0.72 will be multiplied by with 6 and the result will be 4.32. Ceil function will return 4, so 0.72 will be moved to this 4. Similarly, 0.39 will be moved in bucket 2 and 0.94 will be moved in bucket 5. Now all the values in the array have been moved to the corresponding buckets by applying the formula. Now what will we do? Now we will sort all the buckets individually. जो buckets हमारे पास empty हैं, we will do nothing with those, but the buckets having the values greater than 1, having the values more than 1, वो buckets जिनके अंदर एक से ज़्यादा data items हैं उनको हम sort कर लेंगे। कैसे sort करेंगे? कोई सा भी method use कर सकती हैं, कोई सा भी उसमें एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ हो सकता है। इवन इनके ऊपर आप रिकर्सिव बकेट सॉर्ट भी अप्लाई कर सकती हैं। रिकर्सिव क्या है ये हम जो है वो आगे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप कोई सा भी सिंपल एल्गोरिदम जो अब तक आप पढ़ आई हैं, आपने पढ़ा सिलेक्शन सॉर्ट, बबल, इंजर्शन सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट पढ़ा है आपने, शेल सॉर्ट पढ़ा है, तो कोई सा भी एल्गोरिदम अप्लाई करके आप इसको सॉर्ट कर सकती हैं। So after applying any suitable sorting algorithm, uh, we have the data in these buckets in sorted form. यहाँ पे हमने insertion sort को apply किया है. So after applying insertion sort on each bucket, the data in the bucket have become sorted. तो ये bucket 1 के अंदर 2 values थी वो sorted form में हैं एंड बकेट 4 के अंदर 2 वैल्यूज थी, ये भी सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास आ गई। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू मूव द डेटा फ्रॉम दीज बकेट्स इन सीक्वेंस इनटू अरे। So one by one we will pick the bucket. As the first bucket is empty, so we will do nothing with it. Now we will pick the next bucket. इसके अंदर डेटा क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म में है तो इसका डेटा हम अरे में ट्रांसफ़र करेंगे. So 2 values will be transferred in the array. Then we will move to third bucket. It has 1 value. We will move this value in the array. This fourth bucket is empty. We will do nothing. Now the next bucket has 2 values. We will insert or transfer these values in this array, and similarly the data of fifth value will also be transferred. So in this way all the buckets will become empty and the data of all these buckets will be moved to the array. Now if you have look on this array, you can see that this is sorted. So in this way, using bucket sort, you sort your array.
Here is another example to sort the data using bucket sort. In this example, total number of elements are 10. So we will have 10 buckets as we have done in previous example. These are 10 buckets and we have named these buckets as 0, 1, 2 up to 9. Now we will distribute values from the array in these buckets. As I already have told you that any function or any technique may be used. In previous example, we used the formula to multiply number of elements into the corresponding element and we took the ceil function. हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे लेकर उसको मल्टीप्लाई कर दिया था उस कॉरेस्पॉन्डिंग अरे एलिमेंट के साथ और फिर उसका सील फंक्शन ले लिया था, जो वैल्यू आई थी उसे मुताबिक हमने उसको बकेट में डाल दिया। यहाँ पर भी हम जो है हम क्या करेंगे, वी आर वर्किंग विद सेकेंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी 10 प्लेस वाली बिट के साथ हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0.78 इसका 10th प्लेस डिजिट या सेकेंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 7, so it will be moved in bucket number 7. Similarly 0.17 having 10th place digit or least significant digit is 1, so it will be moved in bucket number 1. 0.39 will be moved in bucket number 3. Similarly 0.26 will be moved in bucket number 2. 0.72 will be moved in bucket number 7, and similarly all these numbers will be moved into the corresponding buckets. You can see from here that some of these buckets 0, 4, 5 and 8 are empty, but some of these have more than one element. So now we will work with those buckets having more than one element. जिन buckets में एक से ज़्यादा elements हैं, अब हमने उनके साथ काम करना है और क्या करना है कि हम इनको we will sort these buckets. बकेट्स को इंडिविजुअली हमने सॉर्ट करना है, उनके अंदर मौजूद डेटा को हमने सॉर्ट करना है। सो आफ्टर अप्लाइंग एनी सूटेबल एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऑन दीज बकेट्स, वी विल हैव द डाटा इन दिस फॉर्म। हर बकेट के अंदर आप देख सकती हैं कि आपका डाटा सॉर्टेड है। फर्स्ट ये बकेट नंबर 1, बकेट नंबर 2, bucket number 3. Similarly, these 4 and 5 are empty. This is bucket number 6, 7. The data is in this bucket is this will be moved in this. This is the mistake here. ये 0.72 इधर आएगा और 0.78 इधर आएगा क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस तरह से बकेट के अंदर मौजूद सारा जो भी डाटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। Now the step is to move the data from these buckets into the array. तो ये array है, इन buckets में से हम 1 by 1 डाटा उठाएंगे और इस array में डाल देंगे। तो जब buckets में से डेटा array में मूव होगा तो उसकी फॉर्मेट ये हो जाएगी। So you can see here कि जब हमने buckets में से 1 by 1 सीक्वेंस में डेटा उठाया तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू वर्क इन सीक्वेंस। सबसे पहली बकेट 0 उठाई, इसमें कुछ भी नहीं है, डू नथिंग। देन वी विल पिक बकेट नंबर 1 और उसमें जो डेटा है वो पूरा डेटा उठाएंगे, दोनों वैल्यूज उठाएंगे और अरे में डाल देंगे। देन वी विल पिक बकेट नंबर 2, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, वो उठाएंगे और इधर हम डाल देंगे। बकेट नंबर 3 में से वैल्यू उठाएंगे और अरे के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से बकेट नंबर 6 और 7 का डेटा यहाँ पे देखिए 7.72 और 78 आएगा और फिर 0.94 आएगा। तो जब भी इस तरह से हम ऐड करेंगे तो ये हमारी सॉर्टेड अरे है। नाउ दिस इज द एनालिसिस ऑफ बकेट सॉर्ट। ये हमारी जो बकेट सॉर्ट है वो कितना टाइम कंज्यूम करेगी। दिस बकेट सॉर्ट consumes
बिग ओ ऑफ एन टाइम। इस तरह से कि हमारे पास जो अरे है उसमें हमारे पास जो इंडेक्सेस होते हैं दैट इज 0 to n-1। नाउ एन मीन्स लेंथ ऑफ अरे। एन जो होता है उसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो हम ले लेते हैं और हम वो यूज़ करते हैं 0 to n-1 सो दैट ये हम नंबर ऑफ बकेट्स बना सकें, एम्प्टी बकेट। तो ये अब यहाँ पे दो हम यूज़ करते हैं 1 to n to insert a of I into list b floor of n of I। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो मैंने आपको फंक्शन बताया था बकेट्स के अंदर डाटा को इंसर्ट करने का, तो ये वो फंक्शन है। तो ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी एग्जीक्यूटेड, बिकॉज इट इज़ लूप 1 to n टाइम्स, तो ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। स्टेप 5 and 6 will be executed for big O of n times। Similarly, there is loop again starting from 0 to n-1। So this step number 7 and 8 will take big O of n log of n slash k time। यहाँ पे क्या है कि हमने इस लूप के अंदर क्या करना है, वी हैव टू सॉर्ट लिस्ट b of I विद इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट को यूज़ करके हमने जो है वो वी हैव टू सॉर्ट एवरी लिस्ट इंडिविजुअली। तो जब हम एक लूप के अंदर हर दफ़ा इंसर्शन सॉर्ट को हर बकेट के लिए कॉल कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास जो टाइम होगा वो बिग O of n log of n स्लैश k रिक्वायर्ड होगा। एंड स्टेप नंबर 8 विल टेक बिग O of k टाइम, बिकॉज हेयर वी हैव टू कॉन्केटिनेट लिस्ट। जितनी भी हमारे पास बकेट्स आई हैं उन सबको हमने कॉन्केटिनेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड है वो बिग O of k मीन्स नंबर ऑफ बकेट्स। तो इस तरह से जब हम ये पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बिग O of n इज द टाइम दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस बकेट सॉर्ट। Now here is review or summary of bucket sort. Let us summarize it. Uh, as I already have told you that this bucket sort works very, you can say, very good manner when the data in the array is distributed uniformly. When the distribution of the data is uniform, means there are the values of each type, तो ये जो आपकी बकेट सॉर्ट है इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड वेरी एफिशिएंटली। बट इफ द डाटा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म अगर नहीं है, दिस सॉर्ट डज नॉट वर्क गुड। द बेसिक आइडिया फॉर दिस बकेट सॉर्ट इज दैट वी पार्टीशन the range or the data into a fixed number of buckets. First of all, we decide the number of buckets. So mostly the number of buckets will be equal to the number of elements in the list। अरे में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही बकेट्स आप सिलेक्ट करते हैं आमतौर पे। वैसे इसके अलावा कोई और टेक्निक भी यूज़ की जा सकती है। In next step, we toss each element into its appropriate bucket। मतलब हम जो है वो एलिमेंट्स को वन बाय वन पिक करते हैं और कोई सूटेबल फार्मूला या टेक्निक अप्लाई करके हम फाइनल करते हैं या सिलेक्ट करते हैं कि इन विच बकेट दिस एलिमेंट मस्ट बी मूव्ड। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम अरे या लिस्ट के एलिमेंट्स को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बकेट के अंदर मूव करते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, वी हैव टू कंसीडर ओनली दोज बकेट्स विच आर फिल्ड विद मोर देन वन एलिमेंट। सिर्फ उन्हीं बकेट्स को आपने कंसीडर करना है थर्ड स्टेप में जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एक से ज़्यादा हैं। वो कुछ बकेट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ब्लैंक होंगी, कुछ बकेट्स में सिर्फ वन एलिमेंट होगा। तो वी हैव टू डू नथिंग विद दोज, we just will consider the buckets having elements more than one।
तो उन बकेट्स के अंदर जो डेटा है उसको हम सॉर्ट कर लेंगे कोई सा भी सूटेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ करके। बकेट्स के अंदर जब डेटा सॉर्ट हो जाएगा तो फिर हम वन बाय वन उन बकेट्स को उठाएंगे, लेंगे और उसमें से डेटा को पिक करेंगे और अपने अरे के अंदर डाल देंगे। तो जो हमारी रिजल्टेंट अरे होगी that will contain sorted elements. Now here are some pros and cons of this bucket sort. Pros or the advantages of bucket sort is that it is very fast. It works very fastly when data is distributed uniformly. This sort is asymptotically very fast, having time big O of n when distribution is uniform. If the distribution of that data is uniform, then only in that case it works very fast. But if the distribution is not uniform, then its efficiency may be affected. This bucket sort is very simple to code, as we have discussed that इसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल होता है। सिंपल से सब्जेक्ट इसमें स्टेप्स हैं, तो जब हम इसकी कोडिंग करते हैं तो वो भी सिंपल है। Good for sort. You have to perform, if you have to perform some rough sorting, then you can use this bucket sort very efficiently. There is one disadvantage of the bucket sort, and that is it does not sort in place. यानी कि जो bucket sort है वो in place नहीं है। अब in place sort क्या होती है? कुछ ऐसे sorting algorithms होते हैं जो अपने डेटा को सॉर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करते, सिर्फ उतनी ही स्पेस यूज़ करते हैं जितनी स्पेस डेटा को, ओरिजिनल डेटा को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपकी ये जो बकेट सॉर्ट है इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट, यानी कि ये इन प्लेस नहीं है। इट मीन्स दैट इट विल कंज्यूम सम एक्स्ट्रा स्पेस। ओरिजिनल डेटा को स्टोर करवाने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है उसके अलावा कुछ और स्पेस चाहिए होगी इस बकेट सॉर्ट के डेटा को सॉर्ट करने के लिए। सो वी कैन से दैट दिस बकेट सॉर्ट इज नॉट इन प्लेस सॉर्ट। So that's all about bucket sort. If you have any question, you may ask. Thank you. Allah Hafiz.